Morning all. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, that's perfect. So I'll just wait for the rest to join and then we'll be proceeding ahead accordingly. Good morning. Good morning, everyone. Morning. Good morning all. 3 minutes to start. Yeah, Kashyap, I'll let you know as and when we progress ahead. First, I'll introduce you to the important topics as far as your CET is being concerned, and then we'll be proceeding ahead with the next part. Good morning, Sanskriti. Morning, Nikita. Very good morning, Isha. Morning, Prajot. Morning, Namrata. Kandar, good morning. Sakshi, Gauri, good morning. Good morning, Miguel. Good morning, Palak. Hello, Tanisha. Good morning. Yes, I'll be introducing you on what chapters we're going to be doing, how are we going to be progressing, which are the chapters supposed to be focused on. That's the only reason I've kept the index in front of you. Very good morning, all. So 2 more minutes to go. Once it's 11, I'll start immediately. Very good morning, Bhakti. Good morning, Rucha. Manshi, good morning. Good morning, Sanchit. Sanchi. Morning, Aryan. Morning, Sai. Hello, Tanay. Good morning. Good morning, Ayush. Good morning, Ishan. After a long time. Very good morning, Sanket. Good morning, Arya. Good morning, Aishwarya. Yash. Very good morning. Hi, Parth. How are you? Very good morning. That's great. So there are a lot of new names have been coming on, like not actually new, but meeting you people after a long time. Hi, Shubham. Good morning. That's excellent to see you people back. Great. So here we go on. Yes. Very good morning and welcome all to the first lecture for the CET. And yes, hi, Tushar. So first of all, I'd like to welcome you all on behalf of the classes. We've been glad to hold the course, which is going to be helping you out for the next part to come. Okay. So
Yeah, it's a lot of messages that have been coming, a lot of people. So it might take time for me to respond to each and every one of them. Hi, Shani. Great. Yeah. So first, for the kids who are from CBSE and ICSE boards, a request to all of you, please go to the Google after the lecture has been done. Obviously, after today's schedules that you have, please make sure that you download the textbooks. These textbooks are available on net. You can just Google them off. You'll get these textbooks that are there. So I would recommend you people who have these textbooks. That's going to be of a great help. And the exams that we're going to be focusing on, these are all multiple choice questions. So how to tackle these things, I'll be teaching you as and when we progress ahead. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा how are we supposed to proceed on, how are we supposed to answer any kind of a question that's there. Okay, so do not worry, I'm there to support you throughout your this phase and as long as you people are going to be facing the exams. Okay, so for the kids who are not aware who I am, so good morning all, I am Nikun sir. I'll be teaching you science 2, that's the biological part. Okay. Yeah, great. So now this is the index that's there in front of us. There are 10 major chapters, rather I would say 10 chapters in all, as far as science 2 is being concerned. Now, which are these chapters that are supposed to be focused on? So if at all you have the textbook, that's fine. Otherwise, you can have a screenshot of this. The first chapter, the heredity and evolution, life processes part 1 and life processes part 2. These are the 3 main chapters. After that, animal classification, introduction to microbiology, and cell biology and biotechnology. So 6 chapters which are being majorly supposed to be focused on. सबसे ज़्यादा इन 6 चैप्टर्स पे वेटेज होगा. सो आप लोग इन 6 चैप्टर्स को बड़े अच्छे से बड़े डिटेल में इन सब की पढ़ाई करनी है. सो वी आर नॉट सपोज्ड टू neglect any part of it. Okay. Now, why I have asked you people to download these books is this will be good for reading. As much as you can read, that's going to be more beneficial for your CET exams. Okay, so I think let's not waste time and let's quickly begin on with this chapter of heredity and evolution. Okay, so this chapter, like I have been teaching all 3 boards, the ICSE board, CBSE board, and the HSC board. The kids are aware of it. I've been teaching you as the biology subject. Now, the problem out here is there are certain concepts which are not being done with the CBSE and the ICSE boards. So we will have to stretch on those concepts. That's why devotedly I have kept one lecture for the content covering and one lecture is going to be for the MCQs. Okay, so today will be entirely covering this chapter. I would recommend you people after the lecture is over itself, I want you people to just go through this chapter from these textbooks. आप इनको एक बार पढ़ लो. अगर कुछ दिक्कत आती है, if at all you're not able to understand, you can ask me your doubts by tomorrow. Okay, so once we are there for the problem solving, at that time all of your doubts are going to be clear. Okay, so now I'll stop accepting these. Yes, glad to see you. It is 10th State Board SSC Science 2 textbook. Yes, Prem. ठीक है, चलो. So no more good mornings, no more highs, no more hellos. वो जो भी है सब लेक्चर्स के बाद. आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं with hereditary and the hereditary changes. We're going to be starting on with first with the concept of hereditary. Now, what exactly is hereditary? So ICSE के बच्चों ने evolution, they had a chapter of evolution, but unfortunately it was being omitted. Similarly, CBSE kids, they do not have these things. It was there only for the state board. So first of all, what is heredity? Heredity is nothing but transmission of a character. जब कभी भी किसी तरह का कैरेक्टर एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटरी. ओके, this is also been all associated with a very known term which is known as genetics. Okay, and यहाँ पे इस chapter में हम लोग शुरुआत करेंगे with genetics. Remember, there is one important term that's supposed to be known to all of us is the father of genetics. So if at all you consider Gregor Mendel, यहाँ पे नाम दिया हुआ है John Gregor Mendel. So he was the first one
to start off with genetics, and hence he's been known as the father of genetics. Okay, ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की थी. This is something important. This is something that could come in your exam. So Gregor Mendel first started off with the parts of genetics. उन्होंने सबसे पहले पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो क्रिएट किया था. He was successful, and that's how he was being given the title of the father of genetics. Okay, so this is something that's very important, that's supposed to be known by us. Okay, now ह्यूगो डी वेरिस के थियरीज जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे. द सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड दैट्स देयर आउट हियर इज वॉल्टर एंड सटॉन. That's what you see out here in this line. So Walter and Sutton were the first one to observe the chromosomes. Chromosomes को सबसे पहले देखने वाले और कौन से organisms भी देखे थे? The first ever chromosomes were being seen out here in the grasshopper. Okay, so this is something that's going to be once again important for all of us. Third is a group of scientists, Avery, MacLeod, and McCarthy. These were the first individuals who gave us a conclusion that even small organisms like viruses, they do have the DNA. So Oswald Avery, Maclean McCarthy, and Colin MacLeod, they proved that except the virus, all the living organisms have DNA and the genetic material. So this is something once again that's supposed to be important for us. उसके बाद discovery हुई थी by Francis Jacob Francis Jacob and Jack Monod. उन्होंने they gave us the protein synthesis theory. Okay, now यहाँ पे what is important is we are going to be learning on. So ये तीन basic scientists, तीन major scientists जिसे हमें याद रखना जरूरी है. तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो that will be great. If not, so you have the e-copies which are already available on net. So please make sure that you download them, and that thereby making sure that you have completed this part. Okay, now there are three major terms that have been there as far as the next part has been concerned. The three terms are transcription, translation, and translocation. So first of all, we will be focusing on a term which is known as the central dogma theory. Okay, so now what does the central dogma theory say? So the central dogma theory says that DNA makes RNA makes proteins. This is very important for all of us. आप इस चीज को कहीं लिख लो. This is known as the central dogma theory, which states that DNA makes up the RNA and the RNA is been making up the proteins. Okay, तो हमारे DNA में से RNA बनता है और हमारे RNA में से प्रोटीन्स बनते हैं. ये प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं. It helps you in making hormones. It helps in making up the enzymes. They are structural components. तो ऑल एंड ऑल आपके बॉडी में काफी इंपॉर्टेंस है इन प्रोटीन्स का. ये सारे के सारे प्रोटीन्स कहाँ से जन्म होते हैं? सो दीज आर ऑल बीन मेड फ्रॉम आवर डीएनए. तो जैसा आपका डीएनए होगा उसी तरह से आपका आरएनए होगा, और जैसा आपका आरएनए होगा वैसे ही आपके प्रोटीन्स जो है वो बनेंगे. ओके, सो दिस इज द सेंट्रल डॉगमा थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डॉगमा थियरी ऑफ लाइफ. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे ये जो प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे दिया गया है, द डीएनए इज बीन मेकिंग आरएनए. तो डीएनए मेकिंग आरएनए प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. Okay, and the process of RNA making protein, this is what you know as translation. So these are two more terms, transcription and translation. What is transcription? आप इस चीज को लिख लो. The process of making RNA from DNA is what you know as transcription. The process of making RNA from the DNA. जब DNA में से RNA बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जब प्रोटीन्स बनते हैं इन RNA में से, this process is what you know as translation. Okay, so these are two more important terms that should be known to each and every one of us. We are having the term transcription, we are having the term translation. Okay, both these terms that are there are in context with the central dogma theory. That's how the central dogma theory is having so much importance. So central dogma theory kya kehta hai? I'll repeat that. It says that your DNA makes up the RNA and the RNA makes up the proteins.
The process in which the RNA is being made from the DNA is known as transcription, and the process in which the proteins have been made up of RNA, yes, this is what you know as translation. Okay, so ये सारी चीजें जो हैं ये काफी important है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से. Okay, so I hope आप सब लोगों ने लिखा हुआ है. Now the basic reason is I'm not going to be holding in between is we are having 45 minutes to go and it's a huge chapter ahead. So make sure that you keenly understand each and every concept that's being taught, thereby making sure that these chapters, once you read or once you go through it, it becomes easy for you. Okay, so this is the central dogma theory which says that DNA makes RNA makes proteins. DNA में से जब RNA बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA में से जब प्रोटीन्स बनते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. Okay, so I'll just clear up this theory and let's proceed ahead with the next part. Okay, so यहाँ पे इस पैराग्राफ में सेंट्रल डॉगमा थ्योरी जो पूरी तरह से दिया हुआ है, and this lower paragraph that's there, that how this DNA is been making up the RNA and how the RNAs are going to be making up the proteins. Okay, अब हम इन सारे प्रोसेसेस की डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा बहुत डिटेल जो है इन प्रोसेसेस का हम देखेंगे. सो यहाँ पे ऑन द फर्स्ट पेज itself the lower part is having this process of central dogma. Okay, now let's move on into our DNA back. अब DNA is a nucleic acid. DNA is a type of a nucleic acid. Nucleic acid एक basic biomolecule है जिसके दो कैटेगरीज हैं, one is DNA, the other one is RNA. DNA stands for deoxyribose nucleic acid, जबकि RNA stands for ribose nucleic acid. इन दोनों के दो बड़े मेजर डिफरेंसेस, लिसन टू दिस केयरफुली, डीएनए और आरएनए के बीच में दो बड़े डिफरेंसेस हैं. सबसे पहला डिफरेंस है इज दैट डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो थ्रेड्स होते हैं which have been entangling each other, whereas RNA is just a single stranded molecule. This is the first difference. DNA double stranded molecule है और RNA जो है ये single stranded molecule है. One more thing, DNA चार न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. DNA is being made up of 4 nucleotides, A, T, G, and C. Adenine, thymine, guanine, and cytosine. Okay, this is what ये ICSE students have already studied. The SSC students have already studied. CBSE वालों के लिए नया है. So DNA चार न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. We are having the adenine, we are having the thymine, we are having the guanine, and we are having the cytosine. तो ATGC ये चार न्यूक्लियोटाइड से बनता है हमारा DNA. This is of prime importance. इस चीज को लिख लो. DNA is being made up of ATGC. DNA is a double-stranded molecule. Now let's switch to the RNA. RNA is a single-stranded molecule, and RNA is being made up of 4 different types of nucleotides: A, U, G, and C. Adenine, uracil, guanine, and cytosine. So DNA, RNA में फर्क क्या पड़ा? So as far as these nucleotides have been concerned, डीएनए में थाइमीन होता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन. जबकि हम आरएनए में देखें तो उस थाइमीन की जगह पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ यूरासिल. ओके, इसके ऊपर बेस्ड दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. Listen to this question very carefully. We have the recordings of each and every session, so you don't have to worry. Listen to this question very carefully. Which is the only type of a nucleotide which is being present in RNA? एक ऐसे तरह का न्यूक्लियोटाइड जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, which is that the answer for that is supposed to be very simple. It's supposed to be uracil. आरएनए आपके सामने आया, you should quickly strike that this is nothing but the uracil. उसी तरह से one more question comes on DNA. Which is a nucleotide which is present in DNA but absent in RNA? There should be a quick striking of it. Your answer is supposed to be thymine, because thymine जो है वो DNA में होता है और uracil जो है ये RNA में होता है. Okay, so these are very important terms that are there. Now, जैसे अब हमने अभी देखा कि DNA मॉलिक्यूल जो है ये हमारा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है. So जब कभी भी हमारे बॉडी में देयर इज ग्रोथ, तो उस ग्रोथ के लिए हमेशा सेल का डिवाइड होना जरूरी है. हमारे बॉडी में सेल डिवीजन इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस.
बिकॉज अगर सेल डिवीजन नहीं होगा इट इज गोना बी अ बिग चैलेंज फॉर अस। हमने जब अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी वी स्टार्टेड जस्ट ऑफ विद अ सिंगल सेल, सिर्फ एक ही सेल से शुरुआत की थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी आपके बॉडी में देयर आर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स। सो इतने सारे सेल्स आए कहाँ से? सो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, अब सेल डिवीजन के लिए द इम्पोर्टेंस इज अब ICSE students have learned this, CBSE student had learned this in ninth standard in the chapter of cell. The last concept was of cell division and SSE students have already studied these things. So cell division जो है ये दो तरह के हैं, we are having mitosis, we have meiosis. माइटोसिस जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है, जबकि मियोसिस जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है। इसका क्या मतलब हुआ? माइटोसिस में जब एक सेल में से दो सेल्स बनेंगे, जनरली माइटोसिस में वन सेल गिव्स बर्थ टू टू सेल्स, एक सेल्स में से दो सेल्स का जन्म होता है। Now once this happened, the chromosomal number that is there has been restored, मतलब पेरेंट सेल जिनमें से सेल डिवीजन की शुरुआत हुई और डॉटर सेल्स मतलब जो नए नए सेल्स बने हैं, तो उन दोनों का क्रोमोसोमल काउंट बिल्कुल सेम होता है, दैट इज 46। ओके, दैट इज व्हाई वी नो दिस एज एन इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पेरेंट क्रोमोसोम्स और पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल सेम नंबर के। दूसरा है मियोसिस व्हिच इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब ये रिडक्शनल डिवीजन क्या चक्कर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है, वो आधा हो जाता है। दिस इज व्हाट यू सी इन द रिडक्शनल डिवीजन केसेस व्हिच इज नथिंग बट मियोसिस। मियोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ गैमेटिक सेल्स में ही होगा। मियोसिस इज नेवर गोइंग टू बी अकरिंग इन सोमैटिक सेल्स, जबकि अगर हम माइटोसिस देखें तो माइटोसिस इज ought to occur only and only in the somatic cells. So these are the two basic types of cell divisions that occur. This is having a direct correlation with this, and that's the basic reason I brought this thing to your notice. Okay, great. Let's proceed on. Now, agar cell ne divide karna hai, if at all a cell is supposed to divide, the first thing that the cell has to do is it has to duplicate its material. उसने अपना मटेरियल जो है ये डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेट करना मतलब क्या? So it is supposed to double. So now write down a very important statement. The process of doubling of the DNA of a nucleus, या फिर of a cell. The process of doubling of the DNA in a cell is what you know as replication. इस चीज को लिख लो। Replication मतलब क्या? Replication is a very simple process जहाँ पे DNA के number of copies double हो जाते हैं। The number of copies of the DNA are being doubled. That's what is being done as far as replication is being concerned. ओके, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमने देखा ही है। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस जहाँ पे आरएनए बनता है डीएनए में से, और ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं डीएनए में से। सो दैट्स हाउ दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, ये अभी तक के बेसिक्स थे जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। Remember the name of this scientist because he was from an Indian background and he got Nobel Prize in the year 1968. Okay, so that's what is very important. Since he's from an Indian origin, he's been given quite an importance as far as your CET exams have been concerned. So Dr. Hargobind Khurana, he discovered the genetic code. Okay, what did he discover? He discovered the genetic code. मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डीएनए के स्ट्रेच देखें तो हमारे डीएनए से बनता है आरएनए। अब आरएनए जो है ये तीन तरह का होता है। Okay, there are three basic types of RNA. I'll just open up one more presentation that will help you out for knowing the three basic types of RNA. So RNA जो है ये तीन तरह के होते हैं. We are having the mRNA, we are having the rRNA, and we are having the tRNA. Okay, so here are these three basic types of RNA. पहला सबसे पहला है mRNA. अब mRNA क्या करता है? So mRNA, first of all, it stands for messenger RNA.
हम सब लोग काफी अलग अलग तरह के मैसेंजर्स यूज करते हैं. वी यूज व्हाट्सएप मैसेंजर्स, वी यूज फेसबुक मैसेंजर्स. तो मैसेंजर का काम क्या होता है? मैसेंजर का काम बड़ा ही सिंपल है. इट इज जस्ट सपोज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन. ओके, दैट्स इट व्हाट द मैसेंजर डज. दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए. अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या ट्रांसफर करता है? सो दिस इज सपोज टू ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स. ओके, और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए. ये राइबोसोमल आरएनए इसे क्यों राइबोसोमल कहा जाता है? बिकॉज दिस इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद राइबोसोम. ये हमेशा राइबोसोम के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा. हेंस इट इज नोन एज द राइबोसोमल आरएनए. ओके, सो ये तीन बेसिक तरह के आरएनए, द एमआरएनए, द टीआरएनए एंड द आरआरएनए. एमआरएनए स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोसोमल आरएनए एंड द टीआरएनए स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफर आरएनए. नाउ रिमेंबर, हमने सीखा है कि देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होता है? सो ट्रांसलेशन बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है जहां पे प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम योर आरएनए. अब प्रोटीन्स इफ एट ऑल वी कंसीडर, जैसे लाइक लेट्स अज्यूम चाय बना रहे हो आप. Okay, you are making a tea, so you need ingredients in that, right? So you need water, you need milk, you need tea powder, you need sugar. So you need certain ingredients as far as making up a tea is being concerned. उसी तरह से making up a protein needs a lot of ingredients, and these ingredients are what you know as amino acids. Okay, so हमारे proteins जो है वो बनते हैं from amino acids. अब amino acids क्या है? So amino acids are basic chemical components which are been making up these proteins. Amino acids कहाँ से आते हैं? So they've been developed from the food that we eat. हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होते हैं. These amino acids have been reused from there itself. Okay, there are 20 different types of amino acids as far as the human bodies and the animals and the plants have been concerned. सारे living organisms मिला के there are 20 different types of amino acids that have been found which have been useful. Especially we'll talk about the human beings. Okay, so हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? He discovered all these 20 amino acids. अब mRNA पे there is a sequence of 3 nucleotides. तो पहला तरह का आरएनए है mRNA. On it there is a sequence of 3 nucleotides, and this sequence of 3 nucleotides is what we know as a codon. So I'll just highlight you where exactly is this codon. So this straight line that you can see out here, that's nothing but the mRNA. Now इस mRNA पे there any sequence of 3 nucleotides, let's say ये वाला sequence है, ये 3 nucleotides consecutively they make up something that you know as codon. So ये first triplet है, ये second triplet हुआ, ऐसे तीसरा चौथा. So हर एक triplet को एक codon कहा जाता है. It's been known as a codon. And हर एक codon, each and every codon is going to be coding for one amino acid. Okay, that is why these things are very important. So this is once again a type of a question that does come in your exam. What is a codon? So codons are nothing but small stretches of, they'll be giving you options of as tRNA, rRNA, mRNA and DNA. Your answer is supposed to be mRNA, very clear. Okay. अब after that we have been having the second part. Now tRNA पे अगर हम देखें तो ये आपके सामने ये जो इमेज में दिख रहा है, this ये जो टी जैसा लगने वाला मॉलिक्यूल है ना, दिस इज व्हाट यू नो एज अ tRNA. ये जो है ये tRNA. अब ये tRNA के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे देयर आर 3 कोडॉन्स व्हिच हैव बीन 3 triplets of nucleotides that have been present at the base. हर एक tRNA के बेस पे 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती है. So these are what you know as anticodons. These are known as anticodons. Okay, और यहाँ पे इस नीचे वाले mRNA पे the sequence of 3 nucleotides is what you know as codons. Okay, so these are the two important terms for us, anticodons and codons, because they've been associated with the mRNA and the tRNA respectively. Okay, now third type of an RNA is what you know as the ribosomal RNA, the rRNA. अब ये ribosomal RNA या फिर आपका rRNA जो है, this has been permanently associated with the ribosome. ये हमेशा के लिए राइबोसोम के साथ बंधा हुआ है. It is not supposed to come out. It is not supposed to lose on it any kind of its duty. So इसे हमेशा ही राइबोसोम्स के साथ अटैच रहना ही पड़ता है. Hence they have been having the name as ribosomal RNA. अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो.
Please have a screenshot of this. चलो अब बढ़ते हैं आगे towards the next part. So this is the central dogma theory. आप इसका भी screenshot निकाल लो. The central dogma theory says that your DNA is being making up the RNA and the RNA is going to be making up the proteins. Proteins 20 अलग-अलग तरह के proteins होते हैं. सॉरी 20 अलग-अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो एक प्रोटीन को बनाते हैं. ठीक है. अब यूकैरियोट्स में अगर डीएनए को देखें तो डीएनए किस तरह से पैक किया जाता है. अगर हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल देखें, यूकैरियोटिक सेल मतलब इस तरह का सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पैक किया गया है. So it is having a well developed nucleus. That's why we know these organisms as eukaryotic organisms. Now, in eukaryotic organisms का अगर डीएनए देखें तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे तकरीबन हर एक सेल में there are 6 feet of DNA molecule. 6 फीट का एक डीएनए मॉलिक्यूल जो इसमें लगा हुआ था इन each and every cell of your body. So it's a huge molecule. अब इतने बड़े molecule को इतनी छोटी सी जगह में accommodate करना is a big task. Okay, actually this DNA is supposed to be packed in a very systematic way. One more important statement I'm going to be giving you. You won't find these things in your textbook. ये जो statement मैं कह रहा हूँ कि आप लिख लो, कि आपको textbook में नहीं मिलेगी. It would be better that you people just go through this. आप इस चीज को लिख लो. That will be ideal for you. Okay. Now, if at all we talk about the charge on the DNA, DNA पे कौन सा चार्ज है. अब जैसे हर कोई केमिकल मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है डिपेंडिंग ऑन द आयंस, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स दैट हैव बीन देयर. सो ईच एंड एवरी chemical molecule is going to be having some of the other charge. उसी तरह से if at all you consider your DNA is having a net negative charge. DNA में negative charge होता है. ठीक है, इस चीज को लिख लो आप कहीं पे. DNA has net negative charge. उसी तरह से उसके कॉन्ट्रास्ट में होता है हिस्टोन प्रोटीन. ये जो बीच में आपको ये रेड कलर के मरून कलर के जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, so these are what you know as the DNA histone proteins. I'll just highlight these things. Yes, so you can see these blocks that are there. These are what you know as histone proteins. Okay, अब ये histone proteins क्या करते हैं? So histone proteins are positively charged proteins. इस चीज को भी लिख लो, histones are positively charged proteins. अब डीएनए के पास है नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन के पास है पॉजिटिव चार्ज. सो बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स वी आर अवेयर दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो दैट्स हाउ ये दोनों एकदम अच्छे से एक दूसरे में कंपाइल हो जाएंगे, thereby making sure that the bonding between them is being done tightly. Okay, so that's what you know about this part. Now, a combination of DNA and histone proteins, DNA और histone proteins के combination को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स. Okay, so this is something that can come once again in your exams. Nucleosomes are combinations of dash and dash. So these are the combinations of DNA and histone proteins. DNA के पास negative charge है, histone के पास positive charge है. जब दोनों एक साथ आते हैं, they make up what you know as nucleosome. Okay, so what you can see out here as a structure, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, so this is what you know as a nucleosome. इसको nucleosome कहते हैं because यहाँ पे there is a presence of DNA as well as the protein molecules. Okay, great. Now we'll start off first with the process of replication. अब replication क्या है? So replication is a process जहाँ पर DNA अपने आप के copies को बनाता है. This is basically just as good as having a photocopy, having a Xerox copy of our own DNA. So जब आप अपने ही DNA का duplicate बनाते हो, this has been done obviously for a scientific purpose. When the duplication of this DNA is being done, this process is what you know as a replication. Okay, अब replication क्यों जरूरी है? Because this is being useful in cell division. Okay, इस तरह से because it helps in the process of doubling of the material. किसी भी तरह के material को double करने का काम जो है ये यूकैरियोटिक सेल बड़े efficiently कर लेते हैं. That's why these are very important. Okay, अब दूसरी तरह का term जो हम सीखने वाले हैं, that's what you know as transcription. Transcription जैसे हम सबको पता है, transcription is nothing but the process of production of proteins RNA from your DNA. हमारे DNA में से हमारे RNA को बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है,
Now, when the DNA makes RNA, this is what you know as transcription. Now, when very important thing once again here कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को पढ़ के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें से बना जाता है. ओके, यहाँ पे थाइमिन is being replaced by uracil. So this is what you see as far as the DNA and the RNA is being concerned. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. This is very important. आपको मैं रेकमेंड करूंगा पिछले स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट जो है वो आप निकाल लो सब लोग. Okay, let's proceed ahead with the next part now. Yes, Advait. No, these slides are not going to be shared. So whatever you want, you people can have a screenshot to this. The slideshow is not going to be shared. The presentation is not going to be shared. Yes, yes, definitely you can do that. Advait, what's your doubt? If at all you're not having any doubt, why are you raising up your hands? Yes, Roshni, you'll be getting the uh, recordings of these lectures. Don't worry. Okay, let's proceed on into. Okay, who's raising hand? Positive charge is there on your histone proteins and DNA is having a negative charge. Advait Dobe, please send a message. Now I'm going to be ignoring you if at all there is a hand being raised at your end. And if at all you are not going to be questioning, then there's no point. मराठी मधून नाही अद्वैत. प्रॉब्लेम असा आहे की देर आर आयसीएसई आणि सीबीएसई स्टुडंट ऑल्सो इन दी क्लास. या वर्गात आयसीएसई सीबीएसई ची पण मुलं आहेत. त्यांना फारसं मुळात मराठीशी ते कम्फर्टेबल नाही आहेत. दॅट्स द ओनली रिझन आय एम गोइंग टू बी bilingual. I'm going to be in English and Hindi. Okay, now एक बार हमारे डीएनए में से आरएनए बन गया. So this RNA that is there is what you know as a crude RNA molecule. मतलब इसमें काफी कुछ impurities हैं. This is all of a crude molecule. अब इस आरएनए में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को नहीं लगते. This is something that's not important for our body, but still your body has made these things. Okay, so इस आरएनए को हमें चेंज करना है. वी आर सपोज टू मॉडिफाई दिस आरएनए. ये मॉडिफिकेशन होते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए. जब आपका आरएनए एक बार बन जाता है उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस होंगे. अब चेंजेस कौन से होते हैं? सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग, जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग. सो यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ है इन दिस इमेज. देयर इज व्हाट यू नो एज स्प्लाइसिंग. सो स्प्लाइसिंग मतलब कटिंग. जो अनवांटेड पार्ट है ऑफ द आरएनए जो हमारे बॉडी में कुछ काम का नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस ये चला आ रहा है. दिस इज समथिंग दैट्स बीन मूविंग अहेड. सो दीज अनवांटेड, दीज यूजलेस पार्ट्स आर व्हाट यू नो एज इंट्रॉन्स. इसे कहते हैं इंट्रॉन्स. ओके, अब इंट्रॉन्स कुछ यूजलेस पार्ट्स हैं जो हमें नहीं लगने वाले. दीज आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस. ओके, सो हम इन्हें निकाल देते हैं. दीज आर बीन कट डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑन टॉप ऑफ इट, this RNA has been having one more modification at the 3' end, that is the presence of a poly A tail. बहुत सारे adenine के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लग जाते हैं और यहाँ पे guanosine cap होती है at the 5' end. Okay, so 5' cap and 3' tailing, ये दो चीजें
along with that the splicing mechanism. Splicing मतलब जो unnecessary parts है उन्हें delete करना. जब ये तीनों प्रोसीजर हो जाती है, at that time a normal RNA is being converted into what you know as an mRNA. mRNA माने मैसेंजर आरएनए. तो नॉर्मल आरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए ये तीनों के तीनों प्रोसेस होना जरूरी है. So that are the three basic modifications that have been occurring as far as a normal crude RNA is being concerned. The first kind of a modification is deletion of the introns, which are the unwanted parts. Second is addition of an tail at the 3' end, and third is a presence of a 5' cap. So ये तीनों चीजें जब एक साथ होंगी इस RNA में, only after that an RNA is being converted into a mature RNA part. Okay, please have a screenshot of this as well. Okay, now इस mRNA को कैसे पढ़ा जाता है? सो इस mRNA पे अगर हम लोग देखें तो देयर इज सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं कोडॉन्स. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे mRNA में 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं. कॉन्सेक्यूटिव 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को हम कहते हैं कोडॉन. तो ऐसे हजारों कोडॉन्स जो है एक डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, एक आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ कुछ कोडॉन्स बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके मेंशन किया है. द फर्स्ट कोडॉन दैट्स इज नोन एज AUG, लास्ट 2 पॉइंट्स. AUG को कहा जाता है स्टार्ट कोडॉन. ओके, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होती है. सो दिस AUG दैट इज देयर इज व्हाट यू नो एज द स्टार्ट कोडॉन. यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होती है. एंड द फर्स्ट अमीनो एसिड दैट्स बीन जनरली देयर इन ऑल द प्रोटीन्स, हमारे बॉडी के सारे प्रोटीन्स में जनरली सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा है? सबसे पहला अमीनो एसिड है मीथियोनिन. ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन बनने की शुरुआत ही AUG से होती है, और AUG जो है ये कोड करता है फॉर एन अमीनो एसिड नोन एज मीथियोनिन. So each and every protein that's there is always going to be having the first amino acid as methionine. Okay, so that's how it is important. This is the AUG codon, which is known as the start codon, which codes for an amino acid known as methionine. Okay, great. अब बढ़ते हैं आगे towards the next slide. So Dr. Hargobind Khurana, he started off with this process. He started off with this initiation, and that's how he has been awarded the Nobel Prize in the year 1968. Next, let's proceed here. This is Dr. Hargobind Khurana. Now, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस इज द टेबल दैट वाज बीन गिवन बाय डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, एंड उन्होंने इसी के टेबल के बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था. ओके, नाउ जिस तरह से स्टार्ट कोडॉन होता है, जिस तरह से प्रोसेस की शुरुआत होती है, उसी तरह से ये प्रोसेस कहीं रुकेगा भी सही. सॉरी. सो जैसे प्रोसेस की शुरुआत होती है उसी तरह से ये प्रोसेस कहीं रुकेगा भी, राइट? सो दी place or the codons which have been read जिससे ये प्रोसेस रुक जाता है is what you know as UAA, UGA and UAG. ये तीन कोडॉन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स. ओके, स्टार्ट कोडॉन वाज AUG जो कोड करता है मीथियोनिन को. ये तीन कोडॉन्स आपको दिए हैं UAA, UAG and UGA. All these three are known as stop codons. Okay, now जैसे स्टार्ट कोडॉन AUG मीथियोनिन को कोड करता होगा, उसी तरह से ideally speaking the stop codon should also code for some or the other kind of an amino acid, but generally it does not do that. ये किसी भी तरह के अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, hence this is also known as an nonsense codon. Why?
Why this is known as nonsense codon? The basic idea behind that is since it is not going to be developing any kind of an amino acid, किसी भी तरह के amino acid को कोड नहीं करता है, hence इसे हम nonsense codons भी कहते हैं. ओके, सो हमने स्टार्ट कोडॉन्स देख लिए, हमने स्टॉप कोडॉन्स देख लिए. अब हम बढ़ेंगे आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब एक साथ आएंगे, व्हेन अ लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स आर बीइंग जॉइंड टुगेदर, दे आर गोइंग टू बी इवेंचुअली फॉर्मिंग अप अ प्रोटीन. ये प्रोटीन को बनाना शुरू करेंगे. दिस प्रोसेस ऑफ रीडिंग द एमआरएनए and adding the amino acids is what you know as translation. So translation क्या है? Translation एक ऐसा procedure है जहाँ पे हम इस RNA में से बनाएंगे proteins. Okay, so each and mRNA is going to be having thousands of codons. हर एक tRNA पे there is a complementary anticodon जहाँ पे ये process of translation is going to be initiated. So DNA से mRNA बनता है by the process of transcription और mRNA to प्रोटीन्स बनते हैं by the process of translation. So translation आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है that this is a process of producing protein molecules. Okay, next very important term from this chapter, this is what you know as translocation. Now as the name suggests, this is translocation. इसको कट कर दो, it is trans plus location, transfer of location. जब किसी चीज का लोकेशन बदलता है, this is what you know as translocation. Now राइबोसोम्स जो है ये mRNA पे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. ओके, सो ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस जहां पे आपके mRNA पे आपके राइबोसोम्स जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं. सो दिस प्रोसेस इज व्हाट यू नो एज ट्रांसलोकेशन. सो आपको मैंने सामने एक एनिमेशन दिखाया, यू कैन सी दिस ग्रीन कलर्ड राइबोसोम. देयर आर राइबोसोम्स हम सबने सीखे हैं. आईसीएसई के बच्चों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, सीबीएसई के बच्चों ने भी 9th स्टैंडर्ड में सीखा था और एसएससी के बच्चों ने भी इस चीज को 9th स्टैंडर्ड में सीखा था. सो राइबोसोम्स जो है दीज आर नोन एज द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स बनाने का काम करती है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, राइबोसोम इज बीन ग्रेजुअली मूविंग. धीरे धीरे राइबोसोम जो है वो मूव कर रहा है. सो दिस प्रोसेस where these ribosomes have been moving, this is what you know as translocation. Transfer of location is what you know as translocation. Okay, next बढ़ेंगे हम आगे की concept की तरफ. This is once again very important for us. This is what you know as mutation. The next term important for your CET, I am sure एक आध सवाल इसके ऊपर जरूर आएगा. That's what you know as mutation. Now what can you see out here in this animation that's there? So mutation is a sudden change in the genetic material. जब genetic material में change हो जाता है, when there is a change in the DNA, this is what you know as mutation. Mutation किसी भी वजह से हो सकता है. It can be due to the ultraviolet radiation, it could be due to any other reasons, it could be due to any kind of a stimulus that's been given to your DNA. ये पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल होता है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है. कब होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ पता नहीं होता. So a sudden change in the genetic material is what you know as mutation. So यहाँ पे आप देख रहे हो, this is what comes in your exams as well. हमारे टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम है, वो डायग्राम भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. and they'll be asking you what is happening in this figure. So at that time you are supposed to show that there is nothing but this mutation that's been occurring. कल का लेक्चर हम पूरी तरह से हर कोई अलग अलग तरह के सवाल जो इस चैप्टर पे पूछे जा सकते हैं उन सब पे डिवोट करेंगे टुमारो. आज के आज पूरा ये चैप्टर खत्म नहीं होगा. I'll try and cover the major part of it. थोड़ा सा पार्ट जो है वो कल कवर कर लेंगे. I'll be covering somewhere around 30 different categories, different types of MCQs. मतलब हर तरह के MCQs जो है मैं आपको यहाँ पे क्लास में हम सॉल्व करेंगे सब साथ में. और उसके बाद आप लोगों को वर्कशीट्स जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी. Okay, so let's proceed on ahead with the next concept. So this was the concept of mutation, that is a sudden change in the genetic material. Okay, now क्या mutation useful होता है? Is a mutation useful? So mutation might be useful at times, might be good, it would be harmful as well. Now a simplest disease like cancer, ये होती है because of mutation. So अगर किसी इंसान को कैंसर हो गया तो वो होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. उसके पीछे बाकी कोई रीजन नहीं है. अब ये म्यूटेशन कैसे होता है तो कोई नहीं जानता कि म्यूटेशन कैसा होता है, बिकॉज ये बीन सराउंडेड विद लॉट एंड लॉट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रेडिएशंस. ओके, ये रेडिएशंस हमारे बॉडी सेल्स को पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये हमारे डीएनए में डिफेक्ट कर देते हैं. डीएनए में
एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हटा देते पूरी तरह से। जब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चली जाती है, इट्स बीन डिस्टॉर्टेड, चेंज्ड, तो उस डीएनए के वो जो गड़बड़ वाला डीएनए है, from there you're going to be having a faulty RNA being produced. इस faulty RNA की वजह से हमारे बॉडी में faulty proteins बनेंगे, that is always going to be risky. So mutations might be harmful to your body, but if at all look on into the course of evolution, now we've been gradually moving on into what you know as evolution. So अगर हम लोग evolution का course देखें, तो mutation की वजह से ही evolution हुआ है. We are all aware that human beings have been developed from apes. ऐसा रातों रात तो हुआ नहीं था कि रात को सोए तब एप थे, सुबह उठ गए तो इंसान बन गए. नो, दैट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस that occurred with the change in the conditions that are there. Okay, so as and when the changes kept on moving on, there was a constant rotation, there was a constant change that was there, and due to these constant changes, what happened is the evolution took place. धीरे धीरे इंसानों का बनना जो है वो शुरू हो गया. Now, do you think mutation has been occurring nowadays? Yes, every day there is a change in your body. Every day there is a mutation in your body. Most of the bodies have the ability to reverse these mutations, and mutations को हम reverse कर पाते हैं. But in majority of the cases, it's very difficult to reverse down these mutations. In mutations को घुमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, and that's where there is going to be a change in the human beings. Now, जैसे मैंने बताया, ये changes जो हैं ये gradual changes होते हैं, धीरे धीरे ये changes होते हैं. It is not like that कि abrupt changes हो गए, एकदम इंसान एकदम अचानक से बदल गया अगले जनरेशन में. No, it is a very slow change. Okay, धीरे धीरे कुछ कुछ ऑर्गन्स का फंक्शनैलिटी जो है वो बंद होगा, कुछ का चालू होगा, and that is how the progression is going to be on the normal part. Okay, so mutations might be useful, mutations might be harmful. Okay, तो जैसे मैंने कहा, they'll be useful at sometimes, yes, जैसे evolution में होता है, but they might be harmful, yes, obviously जब कैंसर होता है तब. Okay, अब हम सीखेंगे evolution. Now, what exactly is this evolution? Evolution is nothing but a journey where the human beings were being made from these apes. So as I've said, it wasn't a one-day process. हम लोग जैसे जैसे आगे थियरी सीखते जाएंगे, तो वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे कि how there is a constant change that's been occurring in your body every day. आज भी हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आगे जाके हमारी बॉडी में कुछ बेहतर बनेगा. And as we are all aware from the basic physics as well, that change is the only constant. As long as the human DNA, as long as the human being is going to be changing, तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहेगा. जिस दिन चेंज होना बंद हो गया, the development is going to be stopping. We are all aware about the dinosaurs. Dinosaurs हम सबको पता है, they were being killed because of these meteor showers. उस meteor showers की वजह से the temperature of the globe rise almost up to 800 degrees. Well, that's an horrible temperature for any kind of an organism to survive with. The dinosaurs being perished away in that particular era itself. The second basic reason is अब dinosaurs के साथ कुछ organisms जिंदा रह गए थे जो तभी से थे. Like simplest example you can consider as crocodiles, you can consider cockroaches. तो ये सारे dinosaur era से ही थे. So how come these organisms are still surviving? It is because these were the organisms who adapted to these conditions. किसी भी तरह के changing conditions को adapt करना is supposed to be the priority. If at all there is no adjustment to the conditions, the organism is ought to die. Okay, so that's how the evolution is a very important part as far as this chapter has been concerned. Okay, now just a moment. The dinosaurs were reluctant enough to adapt to these conditions. जब उन्होंने adapt नहीं किया तो वो खत्म हो गए. So इसीलिए कहा जाता है in physics also that change is the only constant. Okay, आप जितना change करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा. Okay, now if at all you consider how these evolution took place. So evolution took place right from the ape generation, and eventually it went on into the human beings who moved on with computers. So आज का generation जो है ये हमारा सारे का सारा ये change जो हुआ है, this is all happened because of these mutations that have occurred. This is because of these evolution, the ability of the human beings to learn. Okay, now इस म्यूटेशन का सीक्वेंस जो है वो किस तरह का था. सो सबसे पहले हमारे अर्थ पे शुरुआत हुई
with the first type of organisms, which are known as the prokaryotic organisms. Okay, now what are prokaryotic organisms? Prokaryotic organisms are the types of the organisms which have a very basic, a preliminary nucleus. Okay, सबसे छोटा undeveloped nucleus organism से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे as and when the world progressed, ये cells जो हैं वो change हो गए, they've been converted into what you know as the eukaryotic organisms. Okay, this is very important part जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. Please note this down. The first organ to be transferred into the eukaryotic organisms was the mitochondria. सबसे पहले mitochondria जो है वो इस eukaryotic organisms में introduce हुआ था. Certain cells could survive this change. Certain cells did not accept that change. जिन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, they have been terminated, या फिर वो प्रोकैरियोट्स ही रह गए. और जिन्होंने ये चेंज एक्सेप्ट कर लिया, these were the ones that were being made into these eukaryotic organisms. Okay, so that is how, as I have said, that change is necessary. So सबसे पहले प्रोकैरियोट से शुरुआत हुई, धीरे धीरे they have been moving on into eukaryotes. Now if at all we consider eukaryotic organisms, पहले ये single organisms थे, that's what you know as unicellular organisms. Gradually moved on into multicellular organisms. They started grouping together, they started functioning together. That's how the growth of the organism took place. So multicellular organisms से शुरुआत हुई और धीरे धीरे the world progressed, and that's how the organisms have also started developing. Okay, ये सब की शुरुआत हुई थी just by mixing of certain chemical molecules. Okay, so ये सारी चीजें जब आप 12th में जाओगे तब आप इन चीजों को पढ़ोगे, that how the life on the earth started. There's an experiment which is known as the Urey-Miller's experiment. Okay, जैसे आप 12th में जाओगे, you'll be studying a Urey and the Miller's experiment where this has been explained nicely. So this is what you know as a chemical theory of evolution or the chemical evolution. ये 12th standard में आपको सिखाया गया है. Now अगर पृथ्वी की शुरुआत देखें, if at all we start off with the earth, we started the earth with 4 basic chemical components. We had the carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. ये चार ही components थे. Apart from that, there was nothing out there on the earth. Okay, there was the combination of these 4 chemical molecules with the lightning that struck the earth. ये सारे chemical molecules fuse होना शुरू कर दिए, and that's how, if at all you consider any kind of a biomolecule, each and every biomolecule has been having 4 basic components in common. सब में carbon होगा, सब में hydrogen होगा, सब में oxygen होगा और सब में nitrogen होगा. So that's how these 4 chemical molecules are the ones that started off the life on the earth. So please have a screenshot of this. Okay, so सबने screenshot निकाल लिया इसका. CHON. C stands for carbon, H stands for hydrogen, O stands for oxygen, and N stands for nitrogen. Okay, great. Let's proceed ahead with the next part. Now, how did we come to know that the evolution has actually occurred or not? Human beings evolved हुए थे monkeys से, yes or no? What do you think? If yes, then what proof do we have? We have nothing to prove. Okay, so there are certain evidences जिसे हम लोग कहते हैं the morphological evidences. So these are the ways to trace out the evolutionary relationship. Human beings been developing from the apes. So this was been proved by the morphological evidences. There was ऐसा तो कोई था नहीं कि उसने बैठे बैठे देखा था that there was a monkey, धीरे धीरे इसका एक इंसान बन गया. There was no one there on the earth by then, right? So आप लोगों को बताया किसने कि human beings जो है वो ape में से derive हुए? नहीं. अगर हम लोग DNA तो DNA तो हमारा काफी सारे organism से similar है. So there are certain morphological evidences that prove this fact. Now what do we mean by morphology? Morphology मतलब external appearance. आज human beings इंसानों में और बंदरों में काफी similarities हैं. So that's what you know as these morphological evidences. So various similarities in the structures of the mouth, the position of the eyes, the structure of the nostrils, the ear pinna, etc., etc. These are the morphologies, the external appearances, which give us an indication that human beings and the monkeys were from the same ancestors or were the same. These things indicate that there are similarities in them, hence proves their origin must have been the same. उसी तरह से अगर आप cat family देख लो,
है ना. So cat family, a very simple thing, हम सबको पता है that domestic cat is also from a cat family, and a lion is also from a cat family, tiger is also from a cat family, and a leopard is also from a cat family. तो ये हर किसी के एंसेस्टर्स है, हर किसी में कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है. मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स, ये जो है वो बिल्कुल सेम है. ड्यू टू द सिमिलैरिटी दैट्स देयर इन दीज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वी कैन successfully say that yes, these organisms are having a similar kind of an origin. उसी तरह से if at all you look at the bears, so you see the panda, the brown bear, the black bear or the polar bears. So सारों के origin जो है वो बिल्कुल same है. Okay, अगर आप dogs की बात करो, so you have the hyenas, you have the foxes, you have the domestic dogs. There are so many varieties in them. सबका origin जो है, इन सबके basic characters जो है वो same है. And that's how this gives us an morphological evidence. Now, the second type of an evidence that's there is what you know as an anatomical evidence. Now, what do we mean by the anatomical evidence? So, anatomical evidences are the similarities in the structures of the parts of the bodies. Okay. So, अगर अलग-अलग body parts देखें और उनके structures अगर details में study करें, तो internal structure सबके बिल्कुल same है. Okay, this gives us the anatomical evidence. Functionally different, but the parts that are there structurally they are the same. So many animals are going to be sharing such body part which appear different, but their functions are same. Like if at all you consider the forelimb mane hands of human beings, cats, whales, bat. Internal structure is सबके bone का structure आपको दिखाया गया है. सबके bone का structure जो है वो almost same है, but हर किसी का function जो है वो पूरी तरह से अलग है. Human beings के hands they've been used for a different kind of a purpose. Cats have been used for crawling. The whales have been using them for swimming, and if at all you consider these bats, they use them for flying. So this gives us an anatomical evidences, like so these structures are going to be the same, but their functions are different. So जो organism similar kind of category से आए, similar family, similar background से आए, so वहाँ पे उनके internal body parts के structures जो हैं वो बिल्कुल same होते हैं. Okay, so please have a screenshot of this. Okay, done. Great. So इसके बाद वाला concept is about the vestigial organ, and I'll be continuing with these concepts and the rest of the chapter in tomorrow's lecture. So I think I'll stop here today. That's it for today's lecture. Thank you so much for joining. See you soon once again in the next lecture. That's tomorrow. Till then, goodbye. Take care. Enjoy your evening and God bless. Okay, chalo. Thank you so much. Goodbye. Take care. I'll end the session. Yes, thank you. Please make sure that you read through your textbook. Please go through your textbook once. Download it from net. Yes, thank you so much. Bye-bye. Take care.